See, as per classification, tumor arising from the odontogenic epithelium. First one would be the ameloblastoma. Other names are edmentoblastoma, edmentinoma, multilocular cyst. Now, as per the definition, it is the true neoplasm of the enamel organ. ये एक true neoplasm है enamel organ का, which does not undergo differentiation to the point of enamel formation. Okay, it is the true neoplasm of the enamel organ. Enamel organ का ये true neoplasm है जो कि differentiation undergo नहीं करता up to the point of enamel formation. Robinson described it as into three ये specific characteristics दी थी. Unicentric means it is single centered. Then secondly, non-function growth जो होगी वो intermittent type होगी, means mediate growth, ना ज़्यादा ना कम. Clinically persistent होगा, anatomically it will be benign. Then edmentinoma, this term was coined by Melasses in 1885. He named it edmentinoma because this term implies to the formation of hard tissue. लेकिन but no such material was present in the lezine. लेकिन ऐसा कोई भी material present नहीं था उस lezine में, इसलिए ये replace कर दिया गया by ameloblastoma by the Churchill in the 1994. Frequency of occurrence, second most common neoplasm है, frequently occurring है, excluding odontoma. Odontoma को छोड़ के ameloblastoma arises equal to the other odontogenic neoplasm combined. Okay, most commonest in India. Then as per classification given by WHO in 2017, we divided ameloblastoma into three types. Ameloblastoma, that is multicystic or unicystic type, extraosseous or peripheral type, and then the third one is the metastasizing ameloblastoma. Now starting with the pathogenesis, ये किस से arise होता है. Considered to be of varied origin, मतलब कि origin तो बहुत सारे होते हैं. Stimulate in the initiating process is unknown. जो stimulus इस process को initiate करता है, इस condition को initiate करता है, वो unknown है. It may be derived from, तो there is a hypothesis कि it might be derived from the cell rest of the dental organ, remnants of the dental lamina, या फिर remnants of the epithelial root sheath. I hope you are clear with the term. These terms as you have studied it in first year. Then the epithelium of the odontogenic cyst, that is mainly the dentigerous cyst के epithelium से disturbances of the developing enamel organ. ठीक है, enamel organ के formation में कोई भी abnormal disturbance होएगी तो it can cause ameloblastoma. Basal cell of surface of epithelium of jaw. देन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. ओके, देन क्लिनिकल फीचर्स, एज मेनली अकरिंग जो एज होगी दैट वुड बी 10 to 90 ईयर्स ऑफ एज. जो मेनली हो तो ये 10 to 90 ईयर्स 10 से लेकिन 90 साल तक में कभी भी हो सकता है, लेकिन जो इसका मेन डायग्नोसिस है वो 30 to 39 ईयर्स में डायग्नोस होता है. 10% ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड इन द चिल्ड्रन, ओनली 10% होंगे जो चिल्ड्रन में होगा, बाकी 80% इट वुड बी इन अडल्ट्स. देन यंगर देन 10 ईयर्स में 1/3 केसेस आएंगे. जो 10 साल से भी छोटे बच्चे हैं उनमें सिर्फ 1/3 केसेस आते हैं. Then sex predilection, no, there is no sex predilection. Racial groups mainly affect करते हैं Asian population को. Symptoms जो आएंगे ये slow growing होगा, painless होगा, bony heart swelling आएगी, resulting in the facial asymmetry. Large lesions, अगर in case lesions are very large तो सिम्टम्स में तो फिर हमारे पास मोबाइल टीथ देखने को मिलता है, पेरेस्थीसिया हमें देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है. Lesions are locally invasive. These are locally invasive and can infiltrate the medullary spaces, causing the erosion of the cortical bone. Means these lesions can invade firstly tissues, then it can invade the bone.
बोन में ये जाएगा मेडुलरी स्पेसेस में, एंड देन मेडुलरी स्पेसेस में जाने के बाद इट कैन कॉज द इरोजन ऑफ द कॉर्टिकल बोन. सी दिस इज द मेडुलरी कैविटी. ठीक है, इसमें ये जाएगा, देन इट कैन कॉज द इरोजन ऑफ द बोन. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.